अब कर दे बंद। मैं एकदम कम कर सकता हूँ, बंद नहीं करने वाला। लीडर्स ने उतार ली, उसकी कार चल रही है। अरे यार तुम्हें पता नहीं क्या। अरे रिकॉर्ड नहीं हो रही ना उसमें, उसमें मेरे ऊपर पीछे पड़ जाओ यार। ओके, सो किन किन स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ रही थी व्हाट वी स्टार्टेड इन द प्रीवियस क्लास? ओके, मैंने कम कर तो दी, बंद कर दे थोड़ी देर। रिवीजन, ठीक है, सो वी कैन डू दैट बिकॉज मैं कुछ नया टॉपिक नहीं स्टार्ट करना चाहती सिंस आपकी क्लासेस कल से ऑफलाइन मोड में स्टार्ट हो रही है, so we can take up the numerical part of it from tomorrow. साथ घूमने Or we can have the revision. पहली बार भी मैंने यही बोला, दूसरी Okay. बार भी, तीसरी बार भी यही बोल रहा हूँ। इधर गाने लगा लो तो लेफ्ट राइट का आपको दिखाई देना बंद हो जाता है। Give me a second. Can somebody unmute themselves and tell me if the screen is visible or not? Yes, ma'am. Thank you so much. Yes, ma'am. शीशा खोल रहा हूँ मैं, इसके लिए मत कहना कुछ मुझे, हर एक चीज अपने हिसाब से। So we studied the time value of money, right? Yes. So in time value of money, we did how the value of money changes over the period of time and it doesn't remain the same. For example, we did कि जैसे हम लोग के मॉम डैड के टाइम पे whatever goods we used to buy with 1 rupee आज की डेट में हम लोग नहीं कर सकते, ठीक है? तो time value of money changes over the period of time. And you always give preference to the current money over the future amount of money which you're gonna receive. जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था कि आपके पास अभी अगर 1 लाख रुपीज है एंड सो आप क्या प्रेफर करोगे, वो 1 लाख रुपीज आपको अभी मिल जाए या फिर वो फ्यूचर में लेट्स से 1 ईयर के बाद मिल जाए? सो यू ऑल सेड कि अभी, ठीक है? बिकॉज वी ऑलवेज हैव दैट प्रेफरेंस. We always prefer the current money over any future money if the amount is gonna remain the same. Yes. जैसे हमने कल एग्जाम्पल किया था कि अगर हमारे पास ऑप्शन है बैंक डिपॉजिट करने का तो हम लोग बैंक डिपॉजिट कर सकते हैं. हम लोग उस केस में फ्यूचर मनी को एक्सेप्ट करेंगे. क्यों? क्योंकि उसमें हमें इंटरेस्ट रेट भी मिल रहा है साथ में. यस. लेकिन अगर हमें कोई इंटरेस्ट रेट नहीं मिल रहा है, कोई हमें एक्स्ट्रा इनकम नहीं हो रही है, तो ऑब्वियसली वी आर गोना प्रेफर द करंट मनी. देन वी डिड द एक्रोनिम्स फॉर इट. दैट इज FV stood for future value of money, PV is the present value of money, R is the interest rate, N is the number of compounding years, and T is the number of years. ठीक है? We did the concept of discounting and compounding. Discounting and compounding क्यों करते हैं? Discounting हम लोग जो भी हमें लग रहा है कि there are risk associated with the cash flows, उसको incorporate करने के लिए in the cash flow statement, in the cash flows which you are going to receive, हम लोग discounting technique use करते हैं. ठीक है? So अगर आपको बोला जाए कि आपको फ्यूचर वैल्यू निकालनी है एंड आपके पास प्रेजेंट वैल्यू गिवन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है एंड नंबर ऑफ इयर्स गिवन है, ठीक है? तो कैसे निकालेंगे? दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला व्हिच वी कैन यूज, दैट इज FV, दैट इज फ्यूचर वैल्यू, इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस R ब्रैकेट्स ऑफ रेज्ड पावर n. इसका सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ फॉर्मूला भी करेंगे जो इसी से डेराइव होगा, वो ही हम लोग जनरली यूज करते हैं इन फाइंडिंग आउट प्रेजेंट वैल्यू, बट दिस इज द बेसिक फॉर्मूला जिससे दूसरा फॉर्मूला भी डेराइव हुआ है. ठीक है? एंड प्रेजेंट
वैल्यू को देगा, प्रेजेंट वैल्यू इक्वल्स टू फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर रेस पावर n। ठीक है, एक फॉर्मूला याद कर लो, दूसरा फॉर्मूला ऑटोमेटिकली लर्न हो जाएगा। सो अब लेट्स सी प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू है क्या। Present value is basically your current starting amount. It is the money you have in your hand at the present time, your initial investment for your future. ठीक है, जो आप जिस चीज से स्टार्ट करते हो, जिस अमाउंट ऑफ मनी से, दैट इज योर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी। ठीक है, जैसे कि अगर हम क्वेश्चन करें कि ओके आई हैव 1 लाख रुपीज एंड आई वांट टू इन्वेस्ट इनटू लेट्स से I want to get a savings account open wherein I fetch a 5% interest rate. So tell me after 5 years मुझे कितना पैसा मिलेगा। So इस केस में whatever I initially had, that was 1 lakh rupees ना, 1 lakh rupees would be my present value। ठीक है, R कितना हो जाएगा 5% एंड नंबर ऑफ इयर्स कितने हो जाएंगे 5। ठीक है, हम लोग ये फॉर्मूला में पुट कर देंगे। द फर्स्ट फॉर्मूला फ्यूचर वैल्यू का से हम लोग वी कैन कैलकुलेट कि आज की डेट में जो हमारे पास 1 लाख रुपीज है वो 5 इयर्स के बाद उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, प्रोवाइडेड वी आर अर्निंग इंटरेस्ट ऑल्सो ऑन इट। अंडरस्टूड? सो व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर कंपाउंडिंग इट। जो भी हमें इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है उसको हम लोग कंपाउंड करके वी आर फाइंडिंग आउट अ प्रेजेंट वैल्यू फॉर इट, द फ्यूचर वैल्यू फॉर इट। अंडरस्टूड? आई एम अज्यूमिंग आप, हाँ जी, then somebody telling me, do I need to repeat the concept? Yes. Yes. Okay. Thank you so much. एक्सक्यूज मैम, हाँ जी, मैम जो इसमें आई है वो आर के इक्वल है। बेटा आई कौन सा क्या? इंटरेस्ट रेट नीचे। यस बच्चे, यहाँ पे आप आई यूज कर लो या आर यूज कर लो, कोई भी डिनोमिनेशन यूज कर, दैट इज ओके मैम, ओके। okay. Then coming on to future value, at a point in time in the future it should be worth more than the present value provided it is earning interest and growing over time. So here again अगर हम लोग सेम एग्जांपल ले तो whatever result जो हमारे पास आएगा कि 5 years के बाद at 5% हमारा 1 लाख रुपीस की क्या वैल्यूएशन होगी, that would be the future value। हमेशा जो फ्यूचर वैल्यू होती है दैट इज ग्रेटर देन द प्रेजेंट वैल्यू, प्रोवाइडेड कि आप जो भी प्रेजेंट वैल्यू थी उस पे आपने कोई इंटरेस्ट अर्न किया है या फिर उसमें कोई ग्रोथ हो रही है। ठीक है, सो वी ऑलवेज assume that the future value would be greater than the present value provided हम इंटरेस्ट अर्न कर रहे हैं। ठीक है, number of periods. This is the timeline for your investment or debts. It is usually measured in years, but it could be any scale of time, such as quarterly, monthly, or even daily. So students, you have to keep in mind whenever you're solving the question, आपको बहुत अच्छे से देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन में आपसे ईयरली पूछा गया है या फिर मंथली पूछा गया है। कई बच्चे क्या करते हैं कि बाय एनुअली पूछा गया है और उस क्वेश्चन को एनुअली के हिसाब से सॉल्व कर देते हैं। सो दैट क्वेश्चन वुड बी रॉन्ग अगर आप ऐसे करते हो। ठीक है, यू वोंट फेच एनी मार्क्स फॉर इट। So you have to understand कि क्वेश्चन में आपके पास कितना टाइमलाइन दिया गया है। इफ इट इज इन इयर्स, जनरली इयर्स में होता है, बट इट कैन बी क्वार्टरली, मंथली, डेली, बाय एनुअली, कुछ भी, कोई भी हिसाब से वो लोग दे सकते हैं। You just have to find out in the same context in which the question has been asked. Then the last thing is interest rate. This is the growth rate of your money over the lifeline of your investment. It is stated in percentage values such as 8% or 0.08. ठीक है, so interest rate is the rate which you expect कि आपको मिलेगा if you make an investment for it. ठीक है, जैसे आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं, आप FD करा सकते हो, आप स्टॉक मार्केट में डाल सकते हो,
आप कहीं और इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, आप सेविंग्स अकाउंट में डाल सकते हो पैसा, या फिर आप रियल एस्टेट में लगा सकते हो. So whatever suits you the best, which is going to give you the maximum interest rate, you are gonna invest it there. And generally जो भी interest rate होगा वो percentage terms में वहाँ पे already specified होगा. ठीक है, या तो 8% या 9% कुछ ऐसा परसेंटेज वैल्यू गिवन होगी, या फिर ऐसे 0.08% was the interest rate. So you have to find out it in percentage terms. Okay. So why is there a preference for the present money? So the first point here is, why do we prefer present money? Because future is uncertain. हमें नहीं पता कि whatever current money which we have, future कैसे change होता है, and क्या हम उसको recover कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे. Suppose हमने वो पैसा किसी और को दिया, ठीक है, आज की डेट में, and उसकी credit valuation बहुत अच्छी थी, everything went fine and everything, and we gave him the loan for let's say 5 years, and after 5 years maybe उसके business में problems आ गए, whatever, and he is not able to pay me back. So future बहुत ज़्यादा uncertain होता है. That is why we as investors and business people, we always prefer कि हमारा पैसा जल्दी से जल्दी वापस आए, rather than giving a future date for it, because इतनी uncertainty है that the business environment can change drastically in that period. ठीक है. Second is preference for present consumption. So besides certainty, every person also has a preference for present consumption. Though this preference may be subjective and differ from one person to another, the present money may be required or some specific purpose. For example, to be a consumer durable. So here they are trying to say is, so if you have money, you would always try to fulfill your needs for the present and not prolong it for the future consumption. ठीक है, दो ये हमारी subjective है, ये person to person change होती है, vary होती है, but generally the basic gist remains the same, that everyone has a preference for present consumption, ठीक है, rather than postponing it for the future purposes. ठीक है, मे बी आपको फ्यूचर में वो 5 years के बाद 1 लाख रुपीज मिल गए, लेकिन आपको नीड तो प्रेजेंट में थी ना, फ्यूचर में वो अगर मिल भी गए तो दैट वुड बी ऑफ नो पॉइंट. ठीक है, सो वी always have preference for present consumption. Third is reinvestment opportunities. Both the individual and the firm have preference for present money because they have reinvestment opportunities available to them. If they have got the money, they can invest the money to get further returns on this. This opportunity to get return will not be available if the money is not invested now. So let's say if I had given a loan of 5 lakh rupee to a person and उसने मुझे बोला है कि वो 10 years के बाद देगा, ठीक है, so 10 years तक वो 5 lakh का amount मेरी तो dead weight है ना, dead money है, because I am not earning anything over it. Neither I can use it for my own consumption, neither I can earn any interest over it. जो भी वो पैसा है वो मेरा तो है, लेकिन I cannot even use it. मुझे उस पे कोई भी revenue भी earn नहीं हो रहा है. So it's a kind of a dead money for me. ठीक है, because I'm gonna receive it after 10 years. ठीक है, उसके बीच में there are thousands and millions of things which can go wrong. हो सकता है मुझे पैसा वापस ही ना मिले. ठीक है, सो इंस्टेड कि वो मैंने 5 लाख का अमाउंट 10 साल के लिए किसी को दिया, अगर वो मुझे आज की डेट में मिल जाता, आई कुड हैव इन्वेस्टेड इट समवेयर. अगर मैंने 10 years का टाइम पीरियड ना देके, लेट्स से इफ आई वुड हैव गिवन इट फॉर लाइक अ ईयर और सो, आई कुड हैव इन्वेस्टेड इट फॉर अनदर 9 years एंड आई कुड हैव इन्वेस्टेड एन इंटरेस्ट ओवर इट जो मेरा क्यूमुलेट हो जाता. Yes, so अगर मेरे पास present money है, so I always have the option to reinvest it and earn further revenues on it. ठीक है, so this is another reason why we prefer present money. And the last is inflation. In an inflationary economy, the money received today has more purchasing power than the money to be received in future. In other words,
a rupee today represents a greater real purchasing power than a rupee a year hence. So this is what I was trying to say in the beginning of the lecture as well. Ki, if we compare our generation with that of our parents, वो लोग जितना 1 रुपी या 10 रुपीज से बाय कर पाते थे, हम लोग उतना नहीं बाय कर सकते. Why this has changed? Because of inflation. जो परचेजिंग पावर थी 1 रुपए की या 10 रुपए की या लेट्स से 100 रुपए की भी इवन, वो बहुत ज्यादा चेंज हो चुकी है. चीजें बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो गई हैं. जो हम पहले आराम से बाय कर लेते थे, वी कुड हैव सस्टेन इन लेट्स से 5,000 10,000, वो सस्टेनेबिलिटी बहुत डिफिकल्ट हो गई है. ठीक है, बिकॉज द रियल परचेजिंग पावर हैज डिक्लाइंड. फ्यूचर वैल्यू तो इंक्रीज होती है, बट इन्फ्लेशन भी इंक्रीज होता है एंड परचेजिंग पावर आपकी कम होती है. ठीक है. Thus, a fundamental principle behind the concept of time value of money is that a sum of money received today is worth more than if the same is received after a certain period of time. For example, if an individual is given an alternative either to receive 10,000 now or after 1 year, he will prefer 10,000 rupees now. Is it clear now? Any problems? Any question with regards to this? Counting and discounting techniques. This we will do today physically now. Okay. I'm sharing the attendance link. And just give me a second.